Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and the most merciful. I am your English teacher, Mr. Haroon Shahzad. अब हम पैराग्राफ नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं. पैराग्राफ नंबर 3. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation builder and a great patriot. He wanted to protect the values, culture, and traditions of the Muslims of the subcontinent. He gave the Muslim a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said, "We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation." Difficult words meaning and their synonyms. The first word is builder, mamar, banane wale, maker. The next word is nation, qaum, people. Tradition, rawayat, custom. Securing, हासिल करते हुए, obtaining. Identity, शनाख्त, recognition. The next word is separate, alahda, parted. Homeland, madre watan, motherland. Develop, तरक्की करना, grow. Galvanize, मुतहर्रिक करना, motivate. The next word is united, मुत्तहिद, यूनिफाइड और ज्वाइंट. तो ये इस पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग थे. अब हम इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं. फर्स्ट लाइन इज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मामार थे, यानी कौम को बनाने वाले थे. एंड अ ग्रेट पैट्रियट, और एक अजीम मुहिब्बे वतन. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation builder and a great patriot. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah रहमतुल्लाह अलैह कौम के मामार और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे. He wanted to protect, वो हिफाजत करना चाहते थे. किस चीज़ की हिफाजत करना चाहते थे? The values, culture and traditions, अक़दार, सकाफ़त और रवायात of the Muslims of the subcontinent, बरसगीर के मुसलमानों की. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. आप बरसगीर के मुसलमानों के अक़दार, सकाफ़त और रवायात को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते थे. He gave the Muslims, उन्होंने मुसलमानों को दिया, क्या दिया? A sense of identity, शनाख्त का एहसास. By securing a separate homeland for them, उनके लिए अलग वतन हासिल करके. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. उन्होंने अलग वतन हासिल करके मुसलमानों को उनकी शनाख्त का एहसास दिलाया. He said, उन्होंने फरमाया, we must develop a sense of patriotism, हमें अपने अंदर हुब्बुल वतनी के एहसास को उभारना चाहिए. which galvanizes us, जो हमारे अंदर जोश पैदा करता है. all into one united and strong nation, एक मुत्तहिद और ताकतवर कौम के लिए. He said, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. उन्होंने फरमाया, हमें अपने अंदर हुब्बुल वतनी के एहसास को उभारना चाहिए, जो हमारे अंदर ऐसा जोश और वलवला पैदा करे कि हम एक मुत्तहिद और ताकतवर कौम बन जाएं. अब इस पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश को पढ़ते हैं. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder.
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was nation builder and a great patriot. He was a great patriot. तो यहाँ पर एक सेंटेंस को हमने दो सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट किया है आसान इंग्लिश करते हुए। नेक्स्ट लाइन है he wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. He was willing to protect moral values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. The next line is he gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He got a separate country for the Muslims. सिंपल इंग्लिश करते वक्त यहाँ पे हमने एक सेंटेंस को कंप्लीट किया, नेक्स्ट सेंटेंस यूं स्टार्ट किया, he also gave them a sense of identity. The next line is he said we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. According to our Qaid, patriotism is the only bond to keep Muslims united and strong nation. जी यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 2 की सिंपल इंग्लिश भी कंप्लीट होती है। अब इस पैराग्राफ के अंदर आने वाला एक एडिशनल क्वेश्चन है, बॉक्स क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं। The question is, who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? बरसगीर के मुसलमानों की अलहदा मादर वतन हासिल करने की कोशिशों में किसने उनकी क़यादत की? तो वेरी सिंपल, आपने जहाँ पर स्टार्ट के ऊपर हु की जगह पर कायद-ए-आज़म का वर्ड यूज़ करना है। बाकी सारा क्वेश्चन आपका वही रहेगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना led the Muslims of subcontinent in their struggle for a separate homeland. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरसगीर के मुसलमानों के अलहदा वतन हासिल करने की कोशिशों में उनकी क़यादत की। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैराग्राफ 3 भी कंप्लीट होता है।